शंकर जी की जटा से निकले निर्मल गंगा पानी। कोई कहे तुझे गंगा माता, कोई कहे महारानी। शंकर जी की जटा से निकले निर्मल गंगा पानी। कोई कहे तुझे गंगा माता, कोई कहे महारानी, कोई कहे महारानी। तोहे निश्चय फूल चढ़ाए जो तेरी आरती गावे, वो सुख शांति पावे जो तेरी आरती गावे। जय जय गंगा माता जो तेरी आरती गावे, वो सुख शांति पावे जो तेरी आरती गावे। हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता। मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, मैया शरणागति आता। यम
जो जननी गाता, दास वही सहज में, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु भगवान शिवानंदाय नमः। ओम श्री सद्गुरु भगवान शिवानंदाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मोक्षमूलं शिवानन्दाकृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। यस्यान्तर्नादिमध्यं न हि करचरणं, नाम गोत्रं न सूत्रं, नो जातिर्नैव वर्णं, न भवति पुरुषो नो नपुंसं न च स्त्री। नाकारं नो विकारं, न हि जननमरणं, नास्ति पुण्यं न पापं, नो तत्त्वं तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं, ज्ञानबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारणं, ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यार्थं गुरुपादोदकं पिबेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये, निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे, नित्यशुभं निराभासं निराकारं निरञ्जनं, नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्मा नमाम्यहम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां श्री
दक्षिणामूर्ते नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां। जय सरस्वती जय सरस्वती जय सरस्वती पाहि मां। श्री सरस्वती श्री सरस्वती श्री सरस्वती रक्ष मां। जय श्री दुर्गा जय श्री दुर्गा जय श्री दुर्गा पाहि मां। जय श्री दुर्गा जय श्री दुर्गा जय श्री दुर्गा रक्ष मां। जय श्री काली जय श्री काली जय श्री काली पाहि मां। जय श्री काली जय श्री काली जय श्री काली रक्ष मां। जय श्री लक्ष्मी जय श्री लक्ष्मी जय श्री लक्ष्मी पाहि मां। जय श्री लक्ष्मी जय श्री लक्ष्मी जय श्री लक्ष्मी रक्ष मां। सरवण भव सरवण भव सरवण भव पाहि मां। सुब्रह्मण्य 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 रक्ष मां। दत्तात्रेय 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 पाहि मां। दत्तगुरु 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 रक्ष मां। शिवानन्द 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 पाहि मां। शिवानन्द 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 रक्ष मां। जय गुरु शिव गुरु हरि गुरु राम। जगद्गुरु परम गुरु सद्गुरु श्याम। आदि गुरु अद्वैत गुरु आनंद गुरु ओम। चित गुरु चिन्मय गुरु चिन्माया गुरु ओम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। शिवानंदा शिवानंदा सद्गुरुनाथा। शिवानंदा 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 सद्गुरुनाथा। शिवानंदा 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 सद्गुरुनाथा। शिवानंदा। जय गुरुदेव दयानिधि दीन हितकारी। जय जय मोह विनाशक भवबंधनहारी। जय देव गुरुदेव जय देव गुरुदेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी। वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। जय देव गुरुदेव जय देव गुरुदेव। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीने। गुरु बिन ज्ञान न होवे बोधि जतन कीने। जय देव गुरुदेव जय देव गुरुदेव। माया मोहन दी जल जीव बहे सारी।
दे कर में गुरु सब संहारे। जय देव गुरुदेव, जय देव गुरुदेव। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे। जय देव गुरुदेव, जय देव गुरुदेव। गुरु चरणामृत निर्मल सब बाधक हारी, वचन सुनत तम नाशे सब संशय तारी। जय देव गुरुदेव, जय देव गुरुदेव। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय। शिवानंद परम पद मोक्ष गति लीजे। जय देव गुरुदेव, जय देव गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव दयानिधि दीन हितकारी। जय जय मोह विनाशक भवबंधनहारी। जय देव गुरुदेव, जय देव गुरुदेव। O adorable Lord of mercy and love, salutations and prostrations unto thee. Thou art omnipresent, omnipotent and omniscient. Thou art Sachidananda. Thou art the indweller of all beings. Grant us an understanding heart, equal vision, balanced mind, faith, devotion and wisdom. Grant us inner spiritual strength to resist temptations and to control the mind. Free us from egoism, lust, greed, anger and hatred. Fill our hearts with divine virtues. Let us behold thee in all these names and forms. Let us serve thee in all these names and forms. Let us ever remember thee. Let us be ever loyal to thee. Let us ever sing thy glories. Let thy name be ever on our lips. Let us abide in thee forever and ever. Om Shanti, Shanti, Shanti. O all-merciful Gurudev, every thought of my mind, every emotion of my heart, every movement of my being, every feeling and every sensation, each cell of my body, each drop of my blood, all is yours, Gurudev, yours absolutely, yours without any reserve. Gurudev, you can decide my life or my death, my happiness or my sorrow, my pleasure or my pain. Gurudev, whatever you do with me, whatever comes to me from you, will lead me to your lotus feet. Gurudev, you have provided us with the best facilities in the world for our spiritual growth. May we take full advantage of this precious gift of yours, Gurudev. May we look upon the ashram and all its contents as your body and treat them with love and reverence. This is our heartfelt prayer to you, Gurudev. Om Shanti, Shanti, Shanti. Deva Sivananda Dinabandhu Pahi Maam. Deva Deva Sivananda Dinabandhu Pahi Maam. Chandravadana Mandahasa Primarupa Rakshama. Chandravadana Mandahasa Primarupa Rakshama. Madhura Gita Gana Lola Jnana Rupa Pahi Maam.
दिव्य गंगा तीरवासा दानशीला पाहि मां। दिव्य गंगा तीरवासा दानशीला पाहि मां। पापहरण पुण्यशीला परम पुरुषा रक्ष मां। पापहरण पुण्यशीला परम पुरुषा रक्ष मां। भक्तयोगा हृदयवासा स्वामीनाथा पाहि मां। भक्तयोगा हृदयवासा स्वामीनाथा पाहि मां। चित्स्वरूपा चिदानन्दा नमः शिवाय रक्ष मां। चित्स्वरूपा चिदानन्दा नमः शिवाय रक्ष मां। शिवानन्दा 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 पाहि मां। शिवानन्दा 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 पाहि मां। शिवानन्दा 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 रक्ष मां। शिवानन्दा 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 रक्ष मां। सद्गुरु जय सद्गुरु जय सद्गुरु जय पाहि मां। सद्गुरु जय सद्गुरु जय सद्गुरु जय पाहि मां। सद्गुरु जय सद्गुरु जय सद्गुरु जय रक्ष मां। सद्गुरु जय सद्गुरु जय सद्गुरु जय रक्ष मां। गंगारानी 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 पाहि मां। गंगारानी 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 पाहि मां। भागीरथी 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 रक्ष मां। भागीरथी 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 रक्ष मां। देवा देवा शिवानन्दा दीनबन्धो पाहि मां। देवा देवा शिवानन्दा दीनबन्धो पाहि मां। चन्द्रवदना मन्दहास प्रेमरूपा रक्ष मां। चन्द्रवदना मन्दहास प्रेमरूपा रक्ष मां। श्री राम
जय राम जय जय राम भगवान शिवानंद जय जय राम ओ भगवान शिवानंद जय जय राम ओ श्री राम जय राम भगवान शिवानंद जय जय राम ओ भगवान शिवानंद जय जय राम ओ श्री राम जय राम भगवान शिवानंद जय जय राम ओ भगवान शिवानंद जय जय राम ओ श्री राम जय राम भगवान शिवानंद जय जय राम ओ भगवान शिवानंद जय जय राम ओ श्री राम जय राम भगवान शिवानंद जय जय राम ओ भगवान शिवानंद जय जय राम ओ श्री राम जय राम भगवान शिवानंद जय जय राम ओ भगवान शिवानंद जय जय राम ओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम ओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम ओ श्री राम जय राम शिरमुकुट कुण्डल तिलक
ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगा के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा, जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा, प्यार का मोती प्यार का मोती उठाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा रूठी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा, आशा रूठी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा, बंद करो मत द्वार दया का, दे दो मुझको सहारा, बंद करो मत द्वार दया का, दे दो मुझको सहारा, दीप दया का दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। रामा 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 रामा
ocean of love. He who is an ocean of mercy. He who is an ocean of compassion. To him I make my salutation. Rama, 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 Sita. Rama, 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 Sita. He who dwells in the hearts of all. He who controls the minds of all. He who directs the souls of all. To him I make my salutation. Rama, 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 Sita. Rama, 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 Sita. He who is my Guru Deva. He who is my mother and refuge. He who is my divine protector. To him I make my salutation. Rama, 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 Sita. Rama, 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 Sita. He whose actions are pure and selfless. He whose speech is comforting and soft. He whose looks are godlike and soothing. To him I make my salutation. Rama, 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 Sita. Rama, 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 Sita. He whose charity is boundless and limitless. He who gives and gives and gives. He who is known as Sivananda. To him I make my salutation. Rama, 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 Sita. Rama, 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 Sita. He whose teachings are simple and practical. He whose thoughts are lofty and divine. He whose writings are blessed by Saraswati. To him I make my salutation. Rama, 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 Sita. Rama, 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 Rama,
पति भगति तुलसी सार सुदास रामा तुलसी सार सुदास राम नाम पर भरन जुग सावन भादव मास रामा सावन भादव मास सियावर रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। राम नाम मन दीप धरो जी हरे हरि द्वार रामा जी हरे हरि द्वार तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहस उजियार रामा जो चाहस उजियार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सकल कामना हीन जय राम भगत रसलीन रामा राम भगत रसलीन नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हु किय मन मीन रामा तिन्हु किय मन मीन सियावर रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। ब्रह्म राम के नाम भर वरदायक वरदान रामा वरदायक वरदान रामचरित सतकोट महल प्रिय महेश जिय जान रामा प्रिय महेश जिय जान सियावर रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। राम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास रामा कलि कल्याण निवास जो सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसी दास रामा तुलसी तुलसी दास सियावर रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कनिकाल रामा कनक कसिपु कनिकाल चापक जन प्रहलाद जी पालहि दल सुरसाल रामा पालहि दल सुरसाल सियावर रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार रामा अमित कथा विस्तार सूर्या जल जुड़वानहि जिनके विमल विचार रामा जिनके विमल विचार सियावर रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुखदान रामा सेवत सब सुखदान सत समाज सुर लोक सब कौन सुने अस जान रामा कौन सुने अस जान सियावर
Namo Bhagavate Shivanandaya. On behalf of our Divine Master, Sri Swami Sivananda and Pujya Swami Sahajananda, we extend a warm and cordial welcome to all to our Shivananda Day Satsang. We also extend a special welcome to donors, well-wishers, devotees tuning in for the first time, and those from abroad. We read from Guru Bhakti Yoga by Sri Swami Shivananda. Truly, it is said that the Satguru is God incarnate. His greatness is indescribable. The Guru's presence elevates and inspires the disciple with tremendous spiritual vibrations. The greatness of the Guru rests in transforming the lower nature of the disciple. To take refuge at the adorable feet of the Satguru is the true way of life. The way of Sarangati or self-surrender to the Guru is the true way to God realization. No seeker can enjoy eternal bliss unless he has an unwavering faith in his Guru. Whatever the Guru does, though it may appear to be unjustifiable, is right. Unswerving and unflinching faith in the teachings of the Guru is the root of real Guru Bhakti. The Guru always dwells in the heart of his disciple. Kabir says, Guru and Govind both stand before me. To whom shall I bow? Blessed is the Guru who revealed Govinda to me. Only a Guru can show the divine light to his worthy disciple. Guru takes his disciple from the unreal to the real, from mortality to immortality, from darkness to light, from materialism to spirituality. A real Guru can change the destiny of the disciple. Guru's grace alone will enable one to understand the true purpose of life and to have a burning desire to realize God. Om. Om Namo Bhagavate Sivanandaya. An optimist. An optimist gets the best out of life. He hopes for the best and makes the best of conditions and people. The accident is not as terrible as he had feared. The hill is not as steep as he had imagined. The difficulty is not as great as he had expected. Things came out better than he had hoped. New beauty technique. O Devi, O Amma, O Miss. Tinted foundation, cream lotions, makeup foundation, deep rose beige, cream rouge, snow, eyeshadow, face powders, palettes tints, finger art sweeping, the new beauty technique, facial makeup with fingertips. All these will intensify attachment to the body and make you forget your divine nature. If you ever think of your body, you cannot think of Atma. It is a waste of time, energy, and money. Feed the poor with this money. Glory of Ram Nam. Ram Nam is a nectar. It is a life-giving elixir. Status it confers. Wealth it showers. Immortality and eternal bliss it bestows. All distress and afflictions it shatters. Moksha it bestows. Strength and eternal peace it gives. All and everything else it yields. It brings all good. It leads the devotee to Saket Puri, the great heaven. It brings divine grace and light. That is the word, the name Ram, and that I have found. Om Shanti Shanti Shanti. We should never imitate other people in our sadhana. She too used to try to imitate Swami Ramdas because Swami Ramdas talks in the third person. So he would not say I, he would say Ramdas. So when Mother Krishna Bhavana asked him, she also started imitating Swami Ramdas. And the net result,
But people started laughing at her. So she learned that you must never imitate someone else. And because Swami Ramdas was fasting a lot and he used to go for days without food, she also tried that. And she couldn't succeed in the ashram. So she said, I like to eat, I don't like to fast like Papa. She said, I just had my lunch, but when I heard there's something nice in the kitchen, I went back and had another round. They're free and jolly like the children. They don't try to hide. If they want to eat, they eat. People come, we go to someone's home and we want a cup of tea, but we pretend as if we're above tea. And the poor host has got to ask us so many times, and then when I go to people's house, I ask for a cup of tea if I want it. But I know many people, they want it, but they say no, and so on. That's no good at all. See, we must be free and frank like a little child. See, there shouldn't be any sort of diplomacy and all that when you're hungry and the stomach is pinching inside. So I like that attitude. See, wherever we go, we must be natural and simple. And many other sadhanas that she did, she found that she was finding fault with people. She didn't know how to get rid of that. So she used to go to the bathroom when the person was having a bath, she would take that water and drink it. See? So what I'm trying to tell you is that each one must do their own sadhana. We should not try to do what Mother Krishna Bai is doing, and because she did that and we try to do it, it won't succeed. And Swami Venkateswaranda put it very beautifully. Gurudev used to go to the Ganges river, and in winter time, Ganges water is ice cold. See, we know. You just have to jump in and jump out. It is so icy cold. And in winter time, he used to go and stand in the Ganges river up to the hip and do his mala, his japa, and only come out when the sun takes a long time because the mountains are high. So you can imagine how many hours he must be spending, about 2 or 3 hours in that. And that gave a perpetual motion of the bowels. See, it destroyed all the digestive system, the lower part of the body. But because Gurudev had a tremendous constitution, he was able to escape. And of course, years later he realized that it was not the right type of tapas. See, Lord Krishna doesn't condemn that kind of tapas. And Gurudev too realized that by torturing the body, you cannot gain perfect control. But what it did give him was an enormous willpower, a gigantic willpower. So later on, after the office, if we dared follow him to his room in the hot sun, his heart would melt. He would say, no, go, don't come with me, because the sun is warm. And he never allowed people to fast and do all what he did. But the Swami Venkateswaranda says that if we try to do what Gurudev did, and stand in the Ganges water like that, the second day we'll start to cough, the third day will be influenza, fourth day we'll call the doctor, fifth day the body is taken to the cremation ground. See? So never try to imitate someone else. Your sadhana must be your own. You must chalk out something yourself. It shouldn't be imposed upon you by someone else. You must find out your own defects and you must evolve your own methods. One of the desert fathers always kept a small pebble in the mouth because he was very fond of talking. See? And that will stop him from talking. It's a good idea if we all keep one. That I'll recommend we should. I hope that we all copy at least that desert father. See, we talk too much, and so if we keep a pebble in our mouth, at least that will stop half the talking and half the trouble in the house. So something like that you've got to find out, now this is troubling me, I must evolve my own method, not what so-and-so Ramakrishna did or what Swami Sivananda did. So that's the unique feature about the saints. See, Swami Ramdas, when he was doing tapas for 1 week, there'll be no water. He'll never have a bath even. See? And even for toilet purposes, he never washed his hand. But the body of such saints are absolutely pure. They have a sweet fragrance from their body. And often, as Swami Ramdas said that when he used to be above body consciousness, you see, he was never conscious at all about the body and what was happening to it. And they say that when he did come to the towns and villages, and when people took care of him, they would find lice and all sorts of things on his body. And the whole body would be full of dust and dirt.
But in their case, of course, the whole entire system, all the cells and all are purified and glowing with divine power. And even if they don't have a bath for a week, there's no smell at all from the body. But Aurobindo says that those who have bad thoughts, there's always a bad odor from the body. Especially, he says, those who have thoughts of too much of passion. See? So, these are some of the lessons that we've learned from her life. See, continual repetition of God's name, looking at the entire universe. And she would always identify herself with everyone. If there was a death, Mother Krishna Bhai would be there and she would be weeping, she would be crying, just like any mother would do. You might wonder, but it's a great mystery of the saints that inwardly they know who they are, outwardly they behave like normal human beings. They identify themselves with everyone. If you have sorrow, then they will really be sorrowful with you. If you have joy, they will express joy. But they will be above joy and above sorrow. It's something that no one can understand unless you have a very deep knowledge and you know what dual consciousness means, then you'll know. Everyone also felt that Rama was not God. They said, how can Rama be an avatar? See how he's crying for Sita, he's running about crying for Sita, and yet everyone says he's an avatar. So one of the rishis questioned that. The other rishi said, all right, test him. You got psychic powers, change yourself in the form of Sita and stand before Rama and see what reaction comes. And the saint transformed himself as Sita, an exact replica of Sita. And Rama never looked at that Sita because he knew inwardly she was a false one. See? So the saints play a dual role. Outwardly they'll behave like human beings, like Lord Krishna and like Gurudev. Gurudev will say, I have worries and so on, I have pain and so on. But inwardly they'll be jnanis. So Mother Krishna Bhai often says, I've got fear and I've got no fear. I've got fear, but I'm above fear. So they can move in any state. And so it's very difficult for us to understand these saints. We often think that they're favoring one person and they like this person more and they like that person. People have foolish ideas. They think that the saints are like ordinary people that you see in the streets. They like one person more and like the other person less. They go with all sorts of this queer and they watch all these things. They don't go for blessing. They go and see what the saints are giving to this person and that person and how much is talking to this person, how less to that person, and the whole mind gets clouded. See, they don't sit far and sit quietly and try to absorb, but they see all these things. So when we go to the ashrams, we don't benefit by the darshan. See? All these petty ideas come into the mind. The saints do give attention to some people. They might give attention to more. And Mother Krishna Bhai puts it very beautifully. She says that if you have 5 fingers, and if one finger is sore, naturally you're going to treat that one sore finger. That doesn't mean to say you like that sore finger more. So if a person is very bad and evil, naturally he should get more attention. So Gurudev is to look after those evil people more and give them more fruits and sweets than the others. But we don't understand that at all. I know many people went, some rich people also, they said, oh, Gurudev didn't treat me properly. They never gave a cent there, but they expected royal treatment. அபிராமியே எங்கள் அபிராமியே அபிராமியே எங்கள் அபிராமியே கல்லை பராசக்தி அபிராமியே அபிராமியே எங்கள் அபிராமியே கல்லை பராசக்தி அபிராமியே அபிராமியே எங்கள் அபிராமியே அபிமானம் கொண்டோர்க்கு சிவகாமி
शिवानंद सद्गुरुदेवा शिवानंद सद्गुरुनाथा शिवानंद सद्गुरुदेवा शिवानंद राजा भगवान शिवानंद सद्गुरुदेवा शिवानंद सद्गुरुनाथा शिवानंद सद्गुरुदेवा शिवानंद राजा भगवान शिवानंद सद्गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा 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 भगवान शिवानंद सद्गुरुदेवा शिवानंद सद्गुरुनाथा शिवानंद सद्गुरुदेवा शिवानंद राजा भगवान शिवानंद सद्गुरुदेवा शिवानंद सद्गुरुनाथा शिवानंद सद्गुरुदेवा शिवानंद राजा श्याम रे घन श्याम रे 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 गोविंदा गोपाला श्याम मुरारी मोरे नंदलाला गोविंदा गोपाला श्याम मुरारी मोरे नंदलाला श्याम रे घन श्याम रे 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्याम रे घन श्याम रे 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 श्याम रे
शिवानंद सद्गुरु नानक आजा आजा गुरुदेवा श्याम रे घनश्याम रे श्याम रे घनश्याम रे श्याम रे घनश्याम रे श्याम रे घनश्याम रे। राम सियापति राम तुम्हारा नाम सुखों का धाम जय जय राम राजा राम। राम सियापति राम तुम्हारा नाम सुखों का धाम जय जय राम राजा राम। जय राम जय बोलो जय सीताराम बोलो जय राम। जय राम जय बोलो जय सीताराम बोलो जय राम। राम सियापति राम तुम्हारा नाम सुखों का धाम जय जय राम राजा राम। राम सियापति राम तुम्हारा नाम सुखों का धाम जय जय राम राजा राम। जय राम जय बोलो जय सीताराम बोलो जय राम। जय राम जय बोलो जय सीताराम बोलो जय राम। जाकी रही भावना जैसी हो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत पे गीत तैसी मैं तुझको अभिराम तुम्हारा नाम सुखों का धाम जय जय राम राजा राम। राम सियापति राम तुम्हारा नाम सुखों का धाम जय जय राम राजा राम। जय राम जय बोलो जय सीताराम बोलो जय राम। जय राम जय बोलो जय सीताराम बोलो जय राम। संकट में तू साथ रहे तो ओ संकट में तू साथ रहे तो सर पर तेरा हाथ रहे तो सब कुछ है आसान तुम्हारा नाम सुखों का धाम जय जय राम राजा राम। राम सियापति राम तुम्हारा नाम सुखों का धाम जय जय राम राजा राम। जय राम जय बोलो जय सीताराम बोलो जय राम। जय राम जय बोलो जय सीताराम बोलो जय राम। बिन सत्संग विवेक न होई हो बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बसे बन के प्राण तुम्हारा नाम सुखों का धाम जय जय राम राजा राम। राम सियापति राम तुम्हारा नाम सुखों का धाम जय जय राम राजा राम। जय राम जय बोलो जय सीताराम बोलो
बल में है जीवन जब तक मैं जपो अभिराम तुम्हारा नाम सुखों का धाम तुझे जय राम राजा राम राम सियापति राम तुम्हारा नाम सुखों का धाम तुझे जय राम राजा राम जय राम जय बोलो जय सीताराम बोलो जय राम जय बोलो जय सीताराम बोलो जय राम वचन पिता का टूट ना जाए ओ वचन पिता का टूट ना जाए इस कारण तुम बन बन जाए बाह दुखों की काम तुम्हारा नाम सुखों का धाम तुझे जय राम राजा राम राम सियापति राम तुम्हारा नाम सुखों का धाम मुझे जय राम राजा राम जय बोलो जय सीताराम बोलो जय राम जय बोलो जय सीताराम बोलो जय राम तुलसी तेरी महिमा गाए ओ तुलसी तेरी महिमा गाए शिव भी तुझको शीश झुकाए पूजे तुझे हनुमान तुम्हारा नाम सुखों का धाम तुझे जय राम राजा राम राम सियापति राम तुम्हारा नाम सुखों का धाम मुझे जय राम राजा राम जय बोलो जय सीताराम बोलो जय जय बोलो जय सीताराम बोलो जय राम शुभ कर्मों के तुम संचालक ओ शुभ कर्मों के तुम संचालक तुम करता हो तुम ही पालक मैं प्रभु नादान तुम्हारा नाम सुखों का धाम मुझे जय राम राजा राम राम सियापति राम तुम्हारा नाम सुखों का धाम मुझे जय राम राजा राम जय बोलो जय सीताराम बोलो जय बोलो जय सीताराम बोलो जय राम सियापति राम तुम्हारा नाम सुखों का धाम मुझे जय राम राजा राम राम सियापति राम तुम्हारा नाम सुखों का धाम मुझे जय राम राजा राम जय बोलो जय सीताराम बोलो जय बोलो जय सीताराम बोलो जय Om. The following are our announcements. We invite devotees and the public to attend the following forthcoming satsangs. The culmination of the 41-day recital of the Sri Hanuman Chalisa will be on Thursday, 8 September 2022, the most sacred 135th birth anniversary of our Divine Master, Sri Swami Sivananda. The final recital of 11 Sri Hanuman Chalisas, together with a morning sadhana program, will be held online at 5 a.m. Havan will be held at 4 p.m. and will be live streamed from Sivananda Ashram, Reservoir Hills. Sri Gurudev's 135th birth anniversary satsang
will be celebrated at all our ashrams on Thursday, 8 September 2022. Satsang at Sivananda Ashram Reservoir Hills will commence with Ganga Arati at 5:30 p.m. and will be live streamed. There will be Akhanda chanting from 5 a.m. until 4 p.m. Devotees are encouraged to join in one or more of the hourly slots. Our online yoga camp is on Sunday, 18th September 2022, commencing with a home sadhana program from 6 a.m. until 9:45 a.m. Yoga camp lessons are from 9:45 until 10:45 a.m. Lesson topics are the Divine Mother, the dynamic energy of the Lord, and the power of mantra repetition and meditation. Online yoga camp satsang is from 11 a.m. until 12 noon. Our Navaratri satsangs are from Monday, 26 September 2022 until Vijayadashami, which is on Wednesday, 5th October 2022. Satsangs at Sivananda Ashram Reservoir Hills will commence with daily Ganga Arati at 5:30 p.m. followed by satsang. As of the 8th September 2022, daily Ganga Arati at Sivananda Ashram Reservoir Hills will recommence at 5:30 p.m. Puja Swamiji has given elaborate descriptions in our books of the value of the Mahamrityunjaya Mantra, Agni-Otra, and Sri Hanuman Chalisa. Devotees are urged to continue with these practices regularly for their own safety and protection. Agni-Otra will also help to bring rain. As per Puja Swamiji's advice, the Mahamrityunjaya Mantra should be repeated all the time while driving. If we cannot repeat the mantra all the time, then repeat it as often as possible. It will help to prevent accidents, robberies, hijackings, and other calamities. Om Shanti, Shanti, Shanti. ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 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 श्री सद्गुरुदेव की जय। जय जय आरती विघ्न विनायक विघ्न विनायक श्री गणेश जय जय आरती वेणुगोपाल वेणुगोपाल वेणुलोला जय जय आरती अंजनेया अंजनेया हनुमन्ता जय जय आरती दत्तात्रेय दत्तात्रेय त्रिमूर्ति अवतारा जय जय सद्गुरुनादा सद्गुरुनादा भगवान शिवानंद सद्गुरुनादा भगवान विश्वानंद जय जय आरती विघ्न विनायक ॐ सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शान्ति भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 श्री सद्गुरु भगवान की जय।